Assalamu alaikum guys, this is Nisar here, and in this video I'm gonna talk about what are the requirements you need to speak English. If you people are curious to build English in you, then you don't need to worry, okay, because I'm here to clear all the things in this video. So let's get started with today's video. What to speak in English? जब भी बात आती है इंग्लिश बोलने की, we people feel shy, we don't know what to speak, how to speak, what to get out from our mouth. हमें क्या बोलना होता है, कैसे बोलना होता है, ये बिल्कुल कोई अंदाज़ा नहीं हमें होता है, ठीक है। सो इस वीडियो में मैं पूरा आपको बताऊंगा कि मतलब अगर आपके पास बुनियादी जो भी बेसिक चीज़ें होती है, अगर आप वो जानते हो तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इंग्लिश बोलने में. यू वुड हैव नो प्रॉब्लम. ओके, सो I want you people to stay connected throughout the video so that you may get fully benefited from this video. The first thing that you need when it comes to speaking in English, okay, you need to know words in English. And I have categorized words in English into two types. That's action words and non-action words. Words that show action, they are called action words. And words that don't show action, they are called non-action words. Like you might be wondering that what will come in action word में क्या क्या words आ जाएं. Okay, like we have a verb in grammar that's called action word, like go, sing, play, fight, speak, converse, argument. So these words are showing action, that's why I have put them in action category. And in non-action I have put them into four categories, four parts: name, occupation, quality and condition. एनी नेमिंग वर्ड इन योर सराउंडिंग. इफ़ यू आर सक्सेसफुल, अगर आप कामयाब होते हो, आपके इर्द गिर्द कोई भी चीज़ है, अगर आप उनको इंग्लिश में नेम देते हो, दैन इट्स ओके विथ यू. दैट मीन्स नेम इज़ ओके विथ यू. ओके, दैट मीन्स यू आर नेमिंग द थिंग्स अराउंड यू इन इंग्लिश. एंड इट्स इफ़ यू आर सक्सेसफुल डूइंग दिस, then definitely you are in English. And what you need to do, you need to get them out of your mouth. आपको बोलने की कोशिश करनी है आप. Just like I have board, marker, mobile phone, tripod, a window, aside me, curtains. So इस तरह से आपको नाम देना है. Second thing, that's called occupation. आपका कारोबार क्या है, आपका प्रोफेशन क्या है. तो डिफरेंट प्रोफेशंस होते हैं, उन प्रोफेशंस का नाम आपने याद रखना है. जस्ट लाइक डॉक्टर है, आर्टिस्ट है, टीचर है, प्रिंसिपल है, मैनेजर है, रिसेप्शनिस्ट, एंड many occupations are there: cobbler, snack charmer, goldsmith, blacksmith. That you know better. I don't need to explain each and every word here. Okay, so you can understand each and everything. Third thing is quality. Okay, जो किसी चीज़ की खासियत खूबी बयान करता हो, that's called quality. Just like adjective in English. Just like a person, quality is something what remains with a person for a longer period of time, or lifelong, you can say. Just like a person can be short, a person can be tall, a person can be active, passive, enthusiastic, laborious, hardworking. Okay, so these are all called qualities what remain with a person for lifelong, जो बहुत समय के लिए एक इंसान के साथ रहती है. And the fourth thing that I have categorized in non-action, that's called condition. Condition opposite of quality आप ले सकते हो simply, जो एक short समय के लिए रहती है, जो short period of time के लिए रहती है. Just like yesterday cold था, आज moderate है, ठीक है, आज hot भी हो सकता है, scorching hot, वो चीज़ है ill, sick, okay, ill tempered, short tempered. So these are called quality words. You need to have such knowledge as well. So moving to the second thing, we have formation of structures. Formation of structures वो चीज़ें होती है, like we have different tenses in English. You should know that how to talk in present and what to say in past, and how we can pass on our information in future. You should know all the three things. But here in this video I cannot explain you all the tenses. I'm sorry for that. For that you have to wait for my next video. In that video I will clear you all the structures, that how can you put forward your information, how can you pass on your thoughts to the next person in present, past and future. But for a later I will clear you something here. कुछ चीज़ें आपके लिए कर दूंगा यहाँ पे. Like for past, usually we say in with verb second form, and for future we use will, may, might, going to. In case I get time, I will do that as well. I might go there as well. I might go to my maternal home. So this way we say in future, just for your click of your mind. Okay, so that you can get it exactly like how to pass on your information.
the third thing that we need to have in order to build English in ourselves, that's called connector. Okay, so connector has to be there in you people. So what's the role of a connector? What is the function of a connector? The function of a connector is to connect two different talks. Okay, just like we have a connector in mobile phone. So what's the function of a connector in mobile phone? A connector is a little minute thing connected to the mobile body. So what is its role? Its role is to connect two different things, a charger and the mobile body. Same is in English. We have little minute words like and, also, after that. You don't need to go to the advanced connectors, that you will go gradually. Okay, आपको धीरे धीरे जाना है उधर, आपको अभी नहीं जाना है एकदम से, अब धीरे धीरे जा सकते हो, so that you can do it exactly. Okay, so आपने धीरे धीरे little words. So जब हम कोई फॉर्म इन वर्ड से और जो इस स्ट्रक्चर की मदद से जो हम सेंटेंस फॉर्म करते हैं, उसको हम कनेक्शन देते हैं इस चीज से. ठीक है, सो दैट इट कैन बी कनेक्टेड. इसको मिलाया जा सकता है दूसरी बात से. इन ऑर्डर फॉर्म पैसेजेस, आर्टिकल, स्टोरीज, बड़ी बड़ी बातें बन सकती है. ठीक है, ओनली बिकॉज ऑफ दीज थिंग. सो दीज कनेक्टर्स नीड टू बी साउंड. ये अच्छे होने चाहिए. जितने अच्छे हैं इतने अच्छे से आप पास ऑन कर सकते हो अपनी इंफॉर्मेशन. तिमी तिथे पर हेकु ती पानी इंफॉर्मेशन बेकिस ताम त्रयित. ओके, क्याजकि people don't listen you very often. And how can you make people curious towards your speech? It's not everyone's cup of tea. हर किसी की बात नहीं होती. So you have to make them, and these connectors help you to make a connection with your audience. If your connectors are sound in your speech, अगर आपकी speech में अच्छे connectors आपने join किए हैं, what help your audience to reach their hearers and get their attention towards you. Okay, सो ये आप इन चीज़ों से कर सकते हो. अभी नहीं मैं बोल रहा हूँ, अभी आपने करना है बेसिक चीज़ पे लाइक एंड, आल्सो, आफ्टर दैट, ऐसे ऐसे मिला के यू कैन स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश. ओके, इफ यू हैव नाउ ऑल द थ्री थिंग्स, अगर आपको ये सारी चीज़ें हैं, वर्ड्स, फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रक्चर्स एंड कनेक्टर्स, then what do you need at the end of the day? You don't need anything more than a topic. And you know better, everything exists in the universe is a topic. It can be your introduction, it can be your routine, talking on a friend, college, university, school. It can be your private room, it can be your house, your community, mother, father, friend, girlfriend, and it can be anyone. Okay, it can be anything existing. A small thing existing in the world can be a topic. Like this marker can be a topic. Right now I have a mobile phone in front of me, and this mobile phone can be a topic. Tripod, board, education, politics, corruption, all the things existing here is a topic. तो अब आपको क्या करना है यहाँ पे, आपने करना है जब सारी चीज़ें आपके मुझे लगता है लाइक आई होप कि ऑल द थिंग्स आर देयर इन यू, आपके अंदर है. बिकॉज आपने बहुत समय से क्या कर रखा है, स्कूल्स में तो यही सीखा है ना आपने, वर्ड सीखे इंग्लिश में, क्योंकि हमारे जो सब्जेक्ट्स है वो तो इंग्लिश में ही है एक्सेप्ट उर्दू, क्योंकि वो एक लैंग्वेज है तो वो पॉसिबल नहीं है इंग्लिश में आना. ठीक है, तो बाकी सारे सब्जेक्ट्स होप आपके इंग्लिश में ही है ना. मैंने तो पढ़े इंग्लिश में, आप नहीं पढ़े होंगे. ठीक है, या पढ़ रहे हो जितने भी है. ठीक है, तो आपने क्या करना है यहाँ पे, ये वर्ड्स, ये स्ट्रक्चर्स और ये कनेक्टर्स, आई होप दे आर ऑलरेडी हियर, आपके अंदर है अभी. सो यू नीड टू टेक देम आउट. कैसे करना है, प्रैक्टिस में लाना है. ठीक है, सो प्रैक्टिस आउट. देयर इज नो एनी अदर वे. और कोई तरीका ही नहीं है, कोई लैंग्वेज लर्न करने का और कोई तरीका नहीं है. तो आपने क्या करना है, बोलना है, स्पीक करना है ज़्यादा से ज़्यादा. ओके, सो इट वाज माय प्रायोरिटी टू गिव यू दीज थिंग्स. ओके, बिकॉज इन चीज़ों के बगैर आप नहीं बोलोगे कोई लैंग्वेज. ठीक है, मुझे पता है, मैंने एक्सपीरियंस कर रखा है इस चीज़ पे. इन चीज़ों के बगैर आप नहीं बोल सकते. आपको पता ही, जब आपको पता ही नहीं था कि मतलब क्या बोलना है, कैसे बोलना है, तो होप नाउ एवरीथिंग इज ओके विथ यू. आपने सीखा कि मतलब कैसे हम स्टार्ट कर सकते हैं इंग्लिश बोलना. ठीक है, सो मोर देन दिस, इफ यू लाइक माई वीडियो, जस्ट लीव योर कमेंट्स इन द बिलो सेक्शन. ओके, एंड टेल मी लाइक, आप मुझे बता सकते हो कि किस चीज़ पे और मुझे अपने वीडियोस और लाने हो. ठीक है, सो दैट आई कैन हेल्प यू मोर. ज़्यादा से ज़्यादा आपकी मदद हो सकती है. तो इसके अलावा अगर आपको मेरी वीडियो और अच्छी लगती है तो आप
लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को. ओके, so bye for this time. Okay, so thank you for watching the video.